Hello my dear friends, I welcome you to the MCQ solutions of lecture number 6 के साथ जुड़े हुए गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस। हमारा 12th स्टैंडर्ड का थर्मोडायनामिक्स लेसन चल रहा है और आज का छठा लेक्चर है, तो चलिए बात करते हैं उसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? A gas is in a closed container is heated causing the lid of the container to rise. The gas performs 3 joules of work. The gas performs work of 3 joules. To raise the lid such that it has final total energy of 15 joules, so that it has final total energy of 15 joules. How much heat was added to the system? टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी बोलूंगा मैं उसको, डेल्टा यू बोलूंगा उसको, 15 joules. 15 joules. How much heat was added? Delta U plus W heat was added, that is 15 plus 3, that is 18 joules of heat was added. How much heat energy was added to the system? Yeah, थोड़ा सा क्वेश्चन रिफ्रेम करना जरूरी है. A gas performs 3 joule of work, ये बराबर है to raise the lid, इसलिए पॉजिटिव वर्क, such that it has the final total energy of 15 joule. ये actually change in internal energy होना चाहिए, the increase in internal energy 15 joule. That is what they are expecting the question. Yeah, we are expecting the way the question has to be. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Question number 2. In a given process on an ideal gas, W is equal to 0 and W is equal to 0. So Q is equal to delta U plus W. Q is equal to delta U और minus Q is equal to minus delta U. ये क्या दर्शाता है? Heat supplied is used to increase the internal energy, that is the temperature. ये the heat removed is getting converted into decrease in internal energy, that is the temperature. That is what it is indicating. Okay, क्या वो क्या बात कर रहा है? Okay, Q is less than 0. So this case Q is less than 0, यानी सिस्टम हीट रिलीज कर रही है और उसके वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी और उसका टेम्परेचर दोनों ही गिर रहा है. द आंसर इज ए, द टेम्परेचर विल डिक्रीज. द आंसर इज ए, द टेम्परेचर विल डिक्रीज, कम हो जाएगा टेम्परेचर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. A gas is compressed, mind well, compressed, work done will be negative. A gas is compressed at a constant pressure of 50 Newton per meter square. Pressure is equal to 50 Newton per meter square. From a volume of 7 meter cube to 3 meter cube. 7 meter cube to 3 meter cube. 7 meter cube to 3 meter cube. If 400 joules of heat is added to the gas, Q is equal to 400 joules. So 400 joules is added to the gas, then its internal energy will be, okay, क्या होगा internal energy? Q is equal to delta U plus P delta V, that is delta U plus P into V2 minus V1. So 400 is equal to delta U plus 50 into bracket 3 minus 7. 400 is equal to delta U minus 200. Delta U will be equal to 600. The increase in internal energy will be equal to, मेरा जवाब आ रहा है, the increase in the internal energy will be 600 joule. Plus sign is indicating that the internal energy is increasing and the value is indicating by how much. Therefore, the answer is A, first option. A, first option. Question number 4. Choose the correct option. Which is the correct option? Internal energy is a state variable. Change in internal energy
डेल्टा यू इज अ पाथ फंक्शन, ये भी सही है, दोनों सही है. Q and W are path dependent, ये भी सही है. The answer is all of these. The answer is D, all of these. Question number 4. तीनों ऑप्शन सही है. So the fourth option was all of these. Question number 5 की बात करते हैं. Question number 5. Work done by a gas to move the piston is a system against a constant pressure. Okay, एक क्वेश्चन वापस गड़बड़ फ्रेम हुआ है. Work done by a gas to move the piston against a constant pressure is how much? Work done हमको मालूम है, अभी भी इस्तेमाल किया. Work is equal to P into bracket V2 minus V1. P into bracket V2 minus V1. The answer which we get is B, second option. The answer is B, second option. चलिए छठे सवाल का रुख करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन पीवी डायग्राम शोन बिलो द वर्क डन इज डैश. हमने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज वर्क नेगेटिव होता है. यहाँ पे ये क्लॉकवाइज वर्क है. देखो क्लॉकवाइज वर्क है, इट विल बी ट्रीटेड पॉजिटिव. देयरफॉर द आंसर ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज ए, इट इज पॉजिटिव. क्लॉकवाइज वर्क डन इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव. सवाल नंबर 7, 7th क्वेश्चन. The equation of state for 5 grams of oxygen. Okay, what is the equation of state? PV is equal to nRT. That is PV is equal to mass upon molecular mass into RT. PV is equal to 5 upon 32 into RT. This is the equation of state for 5 grams of oxygen. है क्या option? Yes, the answer is A, first option. The answer is A, first option. Question number 8 क्या है? If 300 ml of gas, V1 is equal to 300 ml. If 300 ml of a gas at 27 degrees Celsius, T1 is equal to 300 Kelvin at 27 degrees Celsius is cooled to 7 degrees Celsius. 7 plus 2, 73. 280 Kelvin. Right? When, nahi kya? Then its final volume will be how much? Okay, V2 is equal to how much? V is directly proportional to T. V2 by V1 is equal to T2 by T1. V2 is equal to V1 into T2 by T1. 300 into 280 upon 300, that is 280 ml. ml में चाहिए तो ml, नहीं तो convert कर देते. Yeah, 280 ml. Fair enough. The answer is C. 280 ml. The answer is C. Let us see the 9th question. A point on PV diagram shows, what it shows? A point on the PV diagram shows obviously the state of the system. Thermodynamic process, no, it does not. The curve shows the thermodynamic process rather. The state of the system, yes. Work done, the area under the curve shows the work done, is it not? None of the above. The answer is it shows the state of the system. 9th question का जवाब है B, second option. चलिए हम आ चुके हैं आज के अंतिम सवाल पर. देखते हैं क्या है सवाल. अरे अभी किया हमने वो. The area under a curve on PV diagram represents. It represents the work done on or by the system. It represents the work done on or by the system. तो ये रहा छठे लेक्चर से जुड़े हुए 10 सवाल का एनालिसिस. जवाब तलब किया है हमने. ए ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 and 10. सो मैं हट रहा हूँ वापस एक बार और आपको वक्त दे रहा हूँ ताकि आप इसका पिक निकाल सको और at one go you can have the solutions, right? Okay, just check that out whether there is any problem whatsoever. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सबके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सबका सॉल्यूशन. अगर थ्योरी है तो थ्योरी में क्या इस्तेमाल किया गया है, लॉजिस्टिक्स, वो भी बताया गया है.
आशा करते हैं कि आपको ये 10 के 10 सवालों के जवाब समझ में आए हैं। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे 7वें लेक्चर के गूगल फॉर्म के सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स एंड हैव अ ग्रेट डे।